ये जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है, जो ट्रेड वॉर भी चल रहा है, हमने यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वर्ल्ड टिल्ट हो रही है यूएस ऑर्डर से। India also has to relook at all its alliances. That's what Trump is trying to do. यही produce करो और यही consume करो. There is no global policeman anymore. US, France to a certain extent, and India are the only ones who are sitting on a demographic dividend. Second, the Indian subcontinent sits in a very major important trade route. So we have, in other words, the passage fees. So India will ask questions. It will not blindly follow. टाइमिंग जो थी ऑप्शन दूर हुआ है और उसी समय मंथ्स टाइम आसिम मुनीर को वहां बुला रहे हैं। US will never want democracy in Pakistan. US will always show Pakistan that we are with you. You don't worry. तो ठीक है, इंडिया अपना चल रहा है ट्रेड वेड उनके साथ। इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान that the democratically elected leader is not who I will talk. So that your माई बाप is actually the army chief. अगर ये पीओके का मैटर सेटल्ड हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ होगा नहीं करने को। This Op Sindhu, these kind of strikes which keep happening, these aren't really wars. At the end of the day, nobody is fighting to kill. They are draining our resources. They are saying कि how much of economic damage have we caused? विकसित भारत का जो सपना है वो क्या है और कैसे पूरा हो सकता है? जिस दिन हर भारतीय को 3,000 रुपए पर डे मिलेंगे, उस दिन हम विकसित हो जाएंगे। Frankly, we don't have the. China's population is now hugely in a plummeting decline. In the next, say, 30-40 years, they will cease to exist. The first people to go to space, the first people to put a living organism into space, the first cosmonaut to carry out a spacewalk were Russians, which Soviet Union can't match. At the end of the Second World War, all the major powers realize who has oil will rule the world. Where will the world join? They'll join the winner of the champion. And literally in the Middle East, there are regions where if you walk on the ground, there is oil. हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह और मेरे चैनल का नाम है अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन और सीखने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले पता चले। सर मुझे ये बताइए, ये जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है, जो ट्रेड वॉर भी चल रहा है, ट्रम्प कभी बोल रहा है कि टैरिफ्स बढ़ाऊंगा कभी कम करूंगा, उतने में हमने यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये वर्ल्ड टिल्ट हो रही है यूएस ऑर्डर से। इंडिया क्या सच में मल्टीपोलर बन रहा है या सिर्फ हेजिंग कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ पावर अच्छा है, कहाँ जाने वाला है, वैसे करेंगे? That's what every country should do, by the way. So एक यूएस का प्रेसिडेंट है जिसने अपने फेयरवेल स्पीच में लिखा था कि यूएस शुड नॉट गेट इनटू एनी अलायंसेस। यूएस शुड यूज इट्स जियोग्राफिक पावर कि हम न्यूट्रल हैं, सबसे दूर हैं, हमारे को कोई अटैक नहीं कर सकता। मेक्सिको, कनाडा आर मोर और लेस आर नेबर्स, दोनों साइड में समंदर है। अपने को ये यूरोप के लफड़े में घुसने का नहीं है। ये ट्रंप ने नहीं बोला था, ये ओबामा ने नहीं बोला था, ये बाइडन ने नहीं बोला था। दिस वाज स्पोकन बाय जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इन हिज फेयरवेल स्पीच। सो एवरी नेशन हैज दिस फिलॉसफी। एवरी नेशन विल से कि अच्छा, वो पाकिस्तान को अगर यूएस हथियार दे रहा है तो अपने को रशिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया इज अ नेचुरल एलाई। Pakistan was given arms assistance by America. Now, why did America need to support Pakistan? Interesting story. Stalin is running Soviet Union. And for Stalin, he has paid a huge price for his position in that Yalta conference. Yalta mein hua tha conference. I think 45 after the war got over. तो याल्टा में डिवीजन हो रहा है कि अब कौन क्या लेगा, you will take this, East Germany will come to us, West Germany will come to, Berlin will be divided into two, दोनों साइड दीवार बनेगी, ये सब डिस्कशन हो रहा है। चर्चिल इज फिनिश्ड बाय नाउ। व्हाई इज फिनिश्ड? बिकॉज यूएस इज टेलिंग अभी कॉलोनी शॉलोनी बंद कर भाई, ये सब अभी वो कॉलोनी वॉलोनी नहीं होगी तुम्हारी कि तुम इधर अपनी कॉलोनी, भारत में अपनी कॉलोनी, तो सब बंद करो। व्हाई? बिकॉज यूएस वांट्स टू गेट इनटू दोज एरियाज, सो दे वांट यूके आउट। Soviet Union realizes that US has become very, very powerful. Why? They have blown the nuclear bomb. And at this stage, Stalin does not have it.
स्टालिन के पास न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है at this point of time. So he realizes that this is the beginning of a war between the Soviet bloc and the US. ये दो block खड़े हो जाते हैं and these two blocks start what is called the Cold War. Interesting factoid, more people died in the Cold War by several exponential. Congo itself lost 10 million in one of its domestic first war of Congo, second war of Congo, civil war में 10 million. Total number of Jews killed by Hitler was 6 million. So it puts it in context. That many people died. But basically, dono blocks are now trying for supremacy by getting as many countries as can join. So Eisenhower, who has just won the Second World War, and immediately after that, there is a doctrine to try and get as many countries to join the US. He creates a thing called the Baghdad Pact. So Baghdad Pact, mein, as the name refers to, he takes the Middle Eastern countries and makes them towards the Western Bloc because he doesn't want the Russians getting to the oil. By the way, at the end of the Second World War, all the major powers realize that the person who has oil will rule the world. By the end of Second World War, we have still had coal engines being used. There were steamships being used, steam railways being used. Even in India, steam railways were being used. But there is a realization that abhi oil se kissa hone wala hai. And they discover oil in the Middle East. It's very interesting how they discovered it. Those days, there no way of, drilling to hota nahi tha. So what the Brits and the Americans did, they studied literature. और उन्होंने लिटरेचर में देखा कि किस प्रांत के लिटरेचर में देयर इज अ स्टोरी ऑफ ऑयल लैंप्स एंड इट वाज इन अरेबियन नाइट्स इफ यू सी कि वो रात को दिए जलाते हैं एंड ऑल दैट तो दे न्यू कि इस इलाके में ऑयल होगा नहीं तो दिए कैसे जलाते हैं वेयर डू दे गेट द ऑयल फ्रॉम एंड लिटरली इन द मिडल ईस्ट देयर आर रीजन्स वेयर इफ यू वॉक ऑन द ग्राउंड देयर इज ऑयल मतलब यू कैन फील स्क्वेल्च ऑफ द ऑयल सो दे वांटेड टू टाई अप दिस स्पेस एंड देयर मेन एडवर्सरी नाउ इज सोवियत यूनियन बिकॉज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. And Soviet Union is also expanding. They are doing pacts with Korea. They're doing pacts with Vietnam. They're doing pacts with... Soviet Union always had a love-hate relationship with China because though they are aligned as a communist ideology, both have fought wars against each other for territory. Because naturally, they're neighbors. So they will have territorial... All neighbors will have territorial challenges. All neighbors. Even Canada and US has territorial dispute. कि हमारा है. Naturally, आप घर बनाओगे कहीं पे भी बगल वाले का पेड़ आपके अंदर आएगा उसका फल इधर चला गया ये डिबेट तो होता रहेगा. In some cases it's going to be massive like it happened in Mahabharat for land only it happened no for territory. What else was the Mahabharat for? It was for territory. Correct. ये मेरे को ये इलाका चाहिए मेरे को ये इलाका चाहिए गांव में नहीं 10 गांव भी नहीं दूंगा whatever it may be. So it is always spot on resources. So these two blocks start and at this point the US wants to keep tabs on Soviet Union. एंड उसके लिए उनको दो चीजें चाहिए. एक चाहिए लिसनिंग पोस्ट्स एंड लिसनिंग पोस्ट्स हैव टू बी एज क्लोज टू द सोवियत यूनियन बॉर्डर एज पॉसिबल. बट एनी कंट्री हु पुट्स लिसनिंग पोस्ट इन अनदर कंट्री दैट कंट्री इज लूजिंग इट्स सॉवरेनिटी. क्योंकि अगर अमेरिका आके बोलता है हम श्रीनगर में हम अपना पोस्ट बनाएंगे लिसनिंग पोस्ट जो रशिया को हम सुनना चाहते हैं तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू एग्री टू दैट कि ओके सर आप आके बनाइए यहाँ पे. So the only government which agrees to this is Pakistan. So they need the Pakistani listening post. The second thing they needed was the U-2 bases. So they had aircraft, we still have stealth aircraft called the U-2, which is today called the stealth bomber, but it is also a reconnaissance aircraft. It can go to 40,000 feet and once it can. Those days no satellites have come up as yet. Correct. So these aircrafts have to do and these bases were based in Pakistan. So that is why US needed Pakistan. And the US was arming Pakistan so that Pakistan would be strong and they used to play this anti-India narrative. So US is arming them. So अगर US उनको arm कर रहा है तो naturally we have to go to Russia. A natural ally. Natural ally. And that's why we go to Russia and Russia equips us. So these two blocks are growing until they come to two major races. The first is the space race. So first, they're very interesting. The first people to go to space were Russians. The first people to put a living organism into space is Russian. The first cosmonaut to carry out a spacewalk is a Russian. Right? So the Americans have to now battle because it's an ideology battle also. After all, if there are two champions who are going out to race,
where will the world join? They'll join the winner of the champion. So the communist system says that we were the ones who were able to put a man on the space before. Our cosmonaut reached out of the limit. So US is behind us. The US has to back. So this war is happening, and Reagan makes it Star Wars. He takes the weapons to satellite level, which Soviet Union can't match. The second event that happens is Soviet Union invades Afghanistan, because they want control over this area. Right? Afghanistan, Russia ka underbelly hai. And more importantly, access to waters. Access to, why China is doing now Gwadar port and all that. Yeah. Because they need access to water. CPEC. Yeah, because if they try to come through the Malacca Strait, they can be choked at the Malacca Strait. Similarly, on near island jitne hain, Taiwan, why are they so interested in Taiwan? Because Taiwan, whoever occupies Taiwan is literally sitting outside China. As like whoever occupies Sri Lanka is a major threat for Indian southern peninsula. So basically, these two sides are fighting each other, and Afghanistan, the Soviet Union is unable to take it anymore because itne uske losses ho rahe, itna internally also dead bodies are coming back, and finally there is a rebellion, and Gorbachev loses power, Yeltsin takes over power, and Soviet Union breaks. Now Soviet Union break means US doesn't have any major enemy now, so it becomes a unipolar world. Ab jo US decide karega, everyone has to follow. And US did many things. They bombed Syria, they bombed many countries, they bombed every country which was even a Russian ally, and Russia had no option but to keep quiet because now it doesn't have that strength which it had at one point of time. And also its states break away. Georgia, Herzegovina, this, that, Czechoslovakia, all these states break away until we came to Ukraine. All these states break away. So this is the situation of the world until US decided that now our dependence on the Gulf is not so much. Major reason for this is US has started becoming, it always was, but now it is openly becoming oil and energy independent. They have got shale gas. They are the cheapest gas in the world right now. So their energy costs are really, really low. So they don't need कि अभी अपने को आधे दुनिया में बेसिस लगाने हैं, अपने बंदे मर रहे हैं अफगानिस्तान में, इधर वोटर में प्रॉब्लम हो रहा है, when dead bodies come back, presidents lose elections and all that, अपने को करने की जरूरत नहीं है. Matter of fact, Second World War में भी जब तक पर्ल हार्बर में जापान ने अटैक नहीं किया था, तब तक यूएस का इंटेंशन वाज नॉट टू एंटर द वॉर. देयर वर मेजर बॉडीज इन द यूएस हु सेड कि हम क्यों यूरोप के पंगे में घुस रहे हैं. अभी 20 साल पहले था वो जर्मनी और फ्रांस का लड़ा हुआ, हम गए, हमारे बच्चे मरे वहां पे, फिर हमने पीस एस्टैब्लिश किया. 20 साल के अंदर अंदर फिर से लड़ रहे हैं वो लोग यूरोप में. तो why should we get involved? And there was a very strong lobby which said we should not get involved in the world's problems. These are not our problems. So now it began with actually Obama, and then Biden followed it, and now Trump is following it, where they are basically saying अब हम दुनिया की पुलिसिंग नहीं करेंगे, हमको पर्शियन गल्फ में जो हो रहा है होने दो भाई, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है. Now the Persian Gulf has a problem that they have oil, but they don't have a military. So Saudi Arabia doesn't have a military that is strong. ठीक है, टोकन के लिए एक है, but if tomorrow Iraq again decides कि या Iran again decides कि यार ideological हमारा दुश्मन है Saudi Arabia, so we'll attack Saudi Arabia or whatever, there is no global policeman anymore. No one is there anymore. Now this basically means that India also has to relook at all its alliances. India का फायदा एक है, India के 2-3 फायदे हैं. पहला फायदा यह है कि amongst all countries of the world right now, US, France to a certain extent, and India are the only ones who are sitting on a demographic dividend. Our median population is 28 years old, and of course I'm saying कि चलो stunting, malnutrition वगैरह will solve hopefully. So we are a young population, and that means we will have revenue increasing or revenue generating capability and revenue consumption capability also, very similar to the US. US is also relatively quite young and a totally self-contained economy. They can produce whatever they want to. That's what Trump is trying to do. यही produce करो और यही consume करो. Make it America. We don't need to maintain this long channels of shipping routes and safety and this and that. I don't want to spend money on that. That's their formula. Second, the Indian subcontinent sits in a very major important trade route. Our peninsula, Indian Ocean से ही जाएंगे जिसको भी जाना है. From the Western Hemisphere, the Eastern Hemisphere, whoever wants to go crossover, Far East Asia, Middle East, वहाँ से trade, इधर से trade, energy requirements of all.
Indonesia, Philippines, Japan, all of that has to go through the. So we have, in other words, the passage fees, as we can call it, because it's going in our sphere of. So we are going to play a very important role. And I think India is keeping its options open, saying that we don't need to be. So we are actually part of BRICS also. We are part of Quad also. Now Quad is actually excluding Russia, but BRICS is including Russia. Then there are arrangements. So I think India is now at a juncture where it's saying that we are going to be a serious player. I don't think India will be a superpower in the classical sense, because frankly we don't have the economy to do that at this point in time. But we'll definitely be a heavyweight in the camps of the world, and which side India sort of leans on will have a significance. And I think India is therefore, I'm not using the phrase hedging its bets, but it's keeping options open. It's not aligning itself to anyone. So we are, for example, trading with China but fighting with China. We are trading with Turkey, but Turkey provides arms and ammunition to our adversary Pakistan. We have a very nice weapons arrangement with France, who also supplies to Pakistan. So in the real world, in the real politics, there is no such thing as कि यार तूने मेरे enemy के साथ. It's like दो lawyers जब argue कर रहे होते हैं केस में, very volatile case. तो ये जो दो parties हैं, they expect कि lawyers also going to fight with each other. Lawyers don't fight with each other. After the case is over, they'll go have chai and all that. They are professional colleagues. Yeah. So similarly, world powers, they have a certain dialogue. Like China and India will have एक boundary में हमारा problem है. वो claim कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, आप बोल रहे नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये boundary है, फलाना निमकारा. But you say चलो वो अपना चलता रहेगा. But we will focus on these disputes later. Let's look at how we can improve trade now. Because if trade improves, then there is symbiotic skin in the game, दोनों side का. And both sides will lose if there is war. So that is the way the world works. ठीक है, वो थोड़ा जिंगोइज्म भी दिखाना पड़ता है लोगों को, ये ऐसा. वो तो अपनी जनता को भी तो मोटिवेटेड रखना है. You have to get them motivated, no? Because अभी जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोई मेजर टेरर स्ट्राइक हो गया, जैसे वो बॉम्बिंग हुए थे 2003 में, या जो भी बॉम्बे में बॉम्बिंग्स हुए थे, तो तुरंत उसके बाद यूल सी शूट आउट हुआ था लोखंडवाला में, तो तुरंत उसके बाद यूल सी नाकाबंदी ऑल ओवर द सिटी, सब जगह नाकाबंदी, इधर उधर रहना. एंड यू गो यार, जिसने करना था वो तो करके चला गया कांड. ये नाकाबंदी किस लिए कर रहे हो अभी आप? वो नाकाबंदी इज नॉट बीइंग डन टू कैच देम. नाकाबंदी इज To reassure you. State has taken control. Now state is back. We have taken over control. So a lot of these conversations about Op Sindoor, we did this and all that, is also to tell that we are in control. Control, yeah. Don't worry. Don't worry about it. हो गया, उन्होंने एक अटैक किया, हमने ठोक दिया सालों को. Now you go to Kashmir. But sir, don't you think that टाइमिंग जो थी यूएस की, कि यहाँ पे एक तरफ ऑप सिंदूर हुआ है और जो भी ये हुआ है, और उसी समय इन मंथ्स टाइम आसिम मुनीर को वहां बुला रहे हैं. US, I think, is sending a US has always had special relationship with two countries. One is with Israel, और उसकी वजह इजराइल का बहुत ही strong lobby है वॉशिंगटन में. They own the banks, they own, so they have a very... All the Rothschild, all yes. Pakistan is the other one, because Pakistan and US have had a love distanglement, then love, then distanglement, then love relationship for decades. Why? Began with this, they needed a post there, they'd created a Baghdad Pact which had all the Islamic countries signing up. So Pakistan signed up to it because it's an Islamic country, right? Then they needed Pakistan when they wanted to sort out the Russians. जब उन्होंने रशिया ने invade किया था. Why are they sorting out the Russians? They're taking revenge for Vietnam. Because Vietnam में Rambo movie देखी है? तो उसमें रैम्बो का इंटरोगेशन रशियन कर्नल कर रहा है. Why? Because the Russians were sending their forces in Vietnam to basically help the Vietnamese fight the Americans. So they would give them weapons, this thing, that thing, training and all of that. So every country does. जो mercenaries भी होते हैं, उनके उन्होंने mercenaries भी भेजे थे. Every country does it. So the US has had a relationship with Pakistan where it has used Pakistan for fighting off the Soviet Union. और जैसे वो उनको भगाया, वो उन्होंने अपना कैंप विड्रॉ करके सब आ गए. तो मुशर्रफ सही बोलता है कि we fought your war and now these terrorists are floating around here in Pakistan. Then again they required them and they have to go to Iraq.
को, they needed their bases again. Then again they required when they had to go into Afghanistan. तो इनका पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इसलिए. By the way, US will never want democracy in Pakistan. US, by the way, doesn't want democracy in any country. पाकिस्तान जो US बोलेगा उसको करना ही पड़ेगा, because it doesn't have its own center of gravity from an economic point of view. और पाकिस्तान के पास भी पैसे होते तो would have had a very different attitude. So US and Pakistan have a very special relationship, and US will always show Pakistan that we are with you. You don't worry. तो ठीक है, इंडिया अपना चल रहा है ट्रेड वेड उनके साथ, बट तेरे को खाने पे बुला गया, चल तू आ, we'll give you that. Why? Because they also need Munir to retain power in Pakistan. अगर मेरा कैंडिडेट मैंने बिठाया है और वो कैंडिडेट को मैंने यकीन करना है कि वो पावर में रहेगा, so I have to prop him up. Correct? I have to say, look, I am giving him more importance than the president and the prime minister of Pakistan. I am giving more importance to the army chief. तो मैसेज पाकिस्तान को क्या भेज रहा है वो? ये army chief is your right leader, not your prime minister, not your president. So the greatest democracy in the world is sending a message to Pakistan that a democratically elected leader is not who I will talk to. I will talk to the army chief, so that your Maibap is actually the army chief. So explain to me, do they want democracy in Pakistan or not? Otherwise, they should very clearly say, we will never talk to an army guy, we will only talk to an elected prime minister or president. Usko bhejo. So they want a regime. Any country which wants to hold sway in the world, पूरी दुनिया को अगर उसने कंट्रोल करना है, यूएस ने कंट्रोल करना है, चाइना ने कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली दे वांट लीडर्स इन दोज कंट्रीज जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और जो बोलेगा वो करेगा. मुनीर वाज कॉल्ड बिकॉज द यूएस वांट्स टू टेल पाकिस्तान, तुम डेमोक्रेसी वगैरह छोड़ो, ये जो चीफ है ये चीफ चलाएगा तुम्हारी कंट्री, इसको हम देते रहेंगे एड शेड जो भी है तुम्हारा, अगला IMF का वो कभी रुकेगा नहीं, वो आर्मी चलाएगी तुम्हारी कंट्री, बिकॉज देन दे कंट्रोल पाकिस्तान. They can do what they want in Pakistan. मतलब what US is doing in Pakistan, if it did in any other first world country, it would be like, a sacrilege. You are entering into the country, तुम्हारे special forces घुस रहे हैं उसमें, वो ओसामा बिन को पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, उसको ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसको मारना है मार रहे हैं. कई बार मॉस्क में मार के 30-40 औरतों बच्चों को मार दिया, वो सॉरी बोल के निकल गए. Their operators have shot people. There was a famous case when one of their Jason Bourne kind of a guy went and shot up 4-5 people. He got away by paying blood money or whatever. This cannot be allowed in any country. Can you imagine a Russian going into Britain and killing people, which they did? And look at the furor it created. They told their embassy, nikalo apne sare bande yahan se, diplomatic ties were cut off and all of that stuff. Pakistan cannot do any of that. And in this region, इस पूरे इलाके में और कोई कंट्री नहीं है जहां पे यूएस अपना बेस बना सकता है. अगर आपने सोवियत यूनियन से नीचे और चाइना के साथ, सोवियत यूनियन आपका दुश्मन है, erstwhile, now Russia, चाइना आपका दुश्मन है, अफगानिस्तान has beaten you twice, not once and twice, ईरान आपका दुश्मन है, which is the country which is left? India will fall on its terms. इंडिया को बोला था इन्होंने अपना गल्फ वॉर में कि आप भी भेजो अपनी फौज. इंडिया से नो, वी विल नॉट सेंड आर्मी. टोकन फर्स्ट गल्फ वॉर, वी अलाउड सम रिफ्यूलिंग टू हैपन as a token. Why? Because we have relationship with with Iraq. India has independent relationship with Iraq and with Iran. Matter of fact, it's a very interesting anecdote, factually true, that when Iraq-Iran war was going on, at that point of time, हिंदुस्तान के मिलिट्री एकेडमीज में NDA और IMA में दोनों कंट्री के ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए. तो we were training Iraqi officers and Irani officers in 2 of our academies. Because we have independent relationship with both. तो just because US की दुश्मनी है इराक के साथ, तो मैं क्यों उससे दुश्मनी लूं? मेरा तो उससे हजारों साल का रिलेशनशिप US के एग्जिस्टेंस से पहले चल रहा है. आपके लिटरेचर में काबुली वाला इज अ स्टोरी. काबुली वाला कम फ्रॉम काबुल. So अफगानिस्तान के साथ आपका रिलेशनशिप इज कंटिन्यूइंग फॉर सेंचुरीज. दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू. तो जस्ट बिकॉज US की दुश्मनी है उनसे, इसलिए हम भी उनके, इट डजंट मेक सेंस. सो इंडिया विल आस्क questions, it will not blindly follow. अगर यूएस बोलेगा कि तुम हमारे जहाज खरीदो, बोले नहीं यार, हमारे को रफाल पसंद है और हमारे सारे जहाज तुमसे नहीं खरीदे हैं, क्योंकि तुम साले ना, जिस दिन लड़ाई लगेगी अगर तुम स्पेयर पार्ट नहीं दोगे हमें, तो अपने को ऑप्शंस हमने थोड़े ओपन रखने. थोड़े फ्रांस से लेंगे, थोड़ा यूरोफाइटर लेंगे, थोड़े सी हैरियर्स लेंगे यूके से, ठीक है, अपना लॉजिस्टिकल लोचा थोड़ा बढ़ेगा, बट
we have operational flexibility. You cannot press us in the back and say हम spare part नहीं देंगे तो you can't. जैसे पाकिस्तान को US spare part. That is why Pakistan is also de-risking by going to China. कि ठीक है हम भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालेंगे, थोड़े बहुत यहाँ से लेंगे, थोड़े बहुत यहाँ से लेंगे. So that is the strategic balance. So US का और कोई ऑप्शन नहीं है इस इलाके में. अगर उसने अपना एक फुटप्रिंट बेस रखना है, then Pakistan is the only territory which makes sense for them. And that's the reason why they'll call Munir, give him a lunch, ये वो. उसमें ना Munir is fooling himself कि I have become some खास यार. और भी डोनाल्ड ट्रम्प, उसको भी पता है कि मेरी औकात क्या है, और ट्रम्प भी उसको बता रहा है कि बॉस तेरे को मैंने उधर इसलिए बिठाया है कि यू हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू टू डू. तो आज ऊंचा नहीं करने का, जो तेरे को बोलते हैं तो वो एग्जैक्टली वो कर. दैट्स द रीजन. तो उसमें वी शुड नॉट स्टार्ट रीडिंग इनटू यार मुनीर को बुलाया, अपने पीएम को नहीं बुलाया. दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस. इट्स यू आर इक्वेटिंग टू कंप्लीटली अनरिलेटेड थिंग्स टू ईच अदर. हम जब इतनी तरक्की के रास्ते पे हैं देश में, हमें इतना तवज्जो देना चाहिए पाकिस्तान को कि हम अपनी तरक्की का रास्ता छोड़ के उस पे डिस्कशन, उस पे डिबेट छोड़ के हम ये डिस्कशन पे लग जाने कि हमें इतना ये करना चाहिए था, इतना मारना चाहिए था, 2 दिन और एक्सटेंड हो जाना चाहिए था. ये सारी जो चीज़ें हर न्यूज़ चैनल पे बोल रही थी कि 72 आवर्स और अगर वॉर चल जाता तो बेटर होता, उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज पहुंचता. आपका क्या सोच है इस पे? आई मीन फर्स्टली हमको ये पहले समझना चाहिए कि वॉर होता क्या है. एक लड़ाई होती है, बैटल होता है, एक जैसे आपने करेक्ट वर्ड स्कर्मिश होता है, एक कोई टेरर अटैक होता है, एक उसका रिटेलिएटरी अटैक होता है. और वॉर इज जो 71 में हुआ था, जब पूरा देश ये फैसला लेता है कि अभी हमें अपने एडवर्सरी के साथ एक फुल नेशनल कैपेसिटी को लेके लड़ाई लड़नी है. 2 nations go at each other with their full capacity. Conscription होता है, troops are, मतलब youngsters are pulled out from college, academies will have emergency commission, जैसे हमारा हुआ था 1962 में कि आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है. आपने IMA में आपके जो कैडेट्स अंडर ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग वहीं बंद करके उनको भेजा जाता है पलटनों में. दैट इज अ वॉर. इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड टू आर्मीज, नॉर्दर्न आर्मी, सदर्न आर्मी, ईस्टर्न आर्मी. एंड एक तरीके से देखा जाए तो आर्मी कमांडर वॉर चलाता है पूरा कैंपेन को. DGMO assists him with the military operations, but the war is actually run by the army commander. He runs because one army is fighting. आर्मी कमांडर लेवल तक ये था कि अब जाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर. आर्मी कमांडर्स गिव दैट ब्रीफिंग. सो व्हेन द आर्मी मोबिलाइजेस, दैट इज गोइंग टू बी अ वॉर. अगर हम चले जाते हैं अंदर तो दैट वुड हैव बीन अ वॉर. This Op Sindoor, or before that, Balakot strike, or before that, surgical strike that have happened, and these kind of strikes which keep happening, these aren't really wars. That's point number 1. Point number 2, war doesn't benefit anybody. Neither the aggressor nor the defender. In the end, दोनों का लॉस होता है. और दोनों का लॉस, I'll tell you in a very, very simple way. एक बटालियन को आप अगर पीस स्टेशन में, यहाँ मान लीजिए बैंड्रा जुहू में पलटन है, यहाँ पे उसको यहाँ मेंटेन करते हैं, उसका एक कॉस्ट होता है, जो भी एक कॉस्ट है. करेक्ट. मोमेंट यू मूव दिस बटालियन टू चंडीगढ़, कॉस्ट स्ट्रक्चर गोज अप बिकॉज अब यू हैव टू टेक एवरीथिंग टिल चंडीगढ़. नाउ मूव इट टू सियाचिन, गोज वे अप, वे अप. अभी सारा जहाज से जाएगा, आपकी रोटी भी जहाज से जाएगी, मिल्क मेड भी जहाज से जाएगा. उसमें 7 फ्लाइट जाएंगे तो 2 अबॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि वेदर इज बैड, तो उसका भी कॉस्ट विल बी एमोटाइज्ड इनटू दैट 5 फ्लाइट्स व्हिच वेंट. सो एनी एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर, ये पैसा जो आ रहा है हथियार के लिए, रफाइल के लिए, और बम गिराओ और रेडार खरीदो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो एक एक्सचेकर का तो वही है ना. द टैक्स that is collected by the government through various mechanisms, whichever mechanism it collects. Essentially, the government operates on your and my tax. और मतलब पैसा छाप तो नहीं रहा वो. So whatever money is collected in terms of tax, मान लो 100 रुपए का नोट is your tax. इस महीने का पूरा टैक्स, इस साल का पूरा टैक्स 100 रुपए का नोट है. इससे आपने मिड डे मील चलाना है. मिड डे मील क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप मिड डे मील नहीं चलाएंगे तो आपका जो अगला जनरेशन है, वो जनरेशन ऑलरेडी, जो आप, इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स, इट्स अबाउट 28 to 30% ऑफ स्टंटेड, malnutritioned and low weight category children, and then other issues like iodine deficiency, calcium deficiency, वो एक अलग कहानी चल रही है.
If you don't run midday meal, then you are running a major catastrophic risk कि अगला 20 साल के अंदर अंदर वो जो बच्चे जो आज 3 साल के हैं 5 साल के, जब वो 21 साल 22 साल के वर्क फोर्स में आएंगे, अगर उनका ग्रोथ स्टंटेड है, उनकी एजुकेशन ठीक से नहीं हुई है, उनका हाइजीन ठीक से नहीं हुआ है, वीक है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? इंडिया ही तो उठाएगा ना. इवेंचुअली दे विल बिकम अ लोड ऑन द इंडियन exchequer only. No, so for every one producing person, the number of liabilities will keep on increasing, right? So वो मिड डे मील के लिए भी आपने वहीं से निकालना है, विलेज एजुकेशन के लिए भी वहीं से निकालना है, रोड भी उसी से बनाने हैं आपने, हॉस्पिटल भी उसी से बनाने हैं, स्कूल भी आपने उसी से बनाना है. तो आप एक जब जहाज खरीदते हो 40 करोड़ का 50 करोड़ का, तो आपके 5 या 10 हॉस्पिटल नहीं बनते हैं. करेक्ट, बिकॉज पैसा वहीं से आएगा. देयर इज नो थर्ड kitty into which you can die. So every time we cheer, "Arey, our defense budget has gone up by 2%. तो some other budget has gone down. And ऐसा तो नहीं है कि डिफेंस बजट अगर बड़ा है तो वो बजट के लिए जो पैसा था वो मतलब खाली कहीं पड़ा हुआ था कि यार ये तो संदूक के अंदर बंद था तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे इसको. इट हैज टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम सम बजट. इट विल हैव बी पुल्ड आउट फ्रॉम लाडली बहना. इट हैज टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शन. अगर आपने बॉर्डर में क्लास 8 रोड बनाने हैं क्योंकि आर्मी को कभी भी वहां भेजा जा सकता है, तो इंटीरियर में कहीं रोड नहीं बनेगा. करेक्ट, वही बजट है. सो इफ वी डोंट अंडरस्टैंड कि वॉर इज नॉट जस्ट between Pakistan and India, between China and India. We are fighting a war with Pakistan on a daily basis. Why? Very simply, उसने 26/11 एक अटैक किया था आपका. 16-17 साल हो गए उस अटैक को हुए. 10 लोग इस्तेमाल हुए थे अटैक में. उनका जितना भी लगा वो पैसा 10 लोगों को ट्रेन करने का, वहां से भेजने का, ये वो. मे बी दे ऑल्सो पेड अ बाउंटी. क्या तुम लोग 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली को इतना पैसा दिया जाएगा. जो भी उन्होंने किया, उन्होंने एक बार वो इन्वेस्टमेंट किया. उसके बाद 16 साल से आप किसी भी मॉल में जाओ, बाहर वो कुत्ता का परेड, वो नीचे वो DFMD स्कैनर, आपका फ्रिस्किंग जो होता है, एक वो अटैक की वजह से. वो अटैक तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसका जो कॉस्ट है दैट वी आर पेइंग ऑन अ डेली बेसिस एंड वील कंटिन्यू टू पे. जैसे कश्मीर में पाकिस्तान का स्ट्रेटजी शुरू से ये रहा कि दे विल क्रिएट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, ज्यादा भी नहीं करेंगे. ये जो बालाकोट अभी अपना पहलगाम में हुआ, दिस एक्चुअली वेंट ओवर देयर नॉर्मल बिहेवियर. नॉर्मल बिहेवियर 3-4 को भेजेंगे वहां पे, उनकी शेल्फ लाइफ होगी 72 घंटे की. वो 72 घंटे में 10-15 को वो मारेंगे, 5-6 को मारेंगे और वो भी मर जाएंगे. सिक्योरिटी फोर्सेज विल किल देम. दिस एंश्योर्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज टू बी परमानेंटली डिप्लॉयड इन कश्मीर. It gives a very militarized view. So investments will not come, tourism will not come. So by just keeping that आग को थोड़ा सा उबाल में रख के, they are draining our resources over a period of time. This is also a form of war. ये war नहीं तो और क्या है? Correct. Because at the end of the day, nobody is fighting to kill the citizens of the other country. Everybody, US was very, very interested in the Persian Gulf. Why? Because energy is there. They have oil there. Britain was very, very interested in colonizing Asia. Why? Because resources are here. So at the end of the day, जब लड़ाई होती है, वो लड़ाई is not to kill कि मैंने कितने पाकिस्तानी मारे और पाकिस्तानी ये नहीं बोला मैंने कितने इंडियन सोल्जर्स मारे. They are saying कि how much of economic damage have we caused. So economic damage में हमेशा जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा लॉस होगा. Naturally. So in any form of governance, at the end of the day, as a leader, my job is कि मैं अपने कंट्री की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाऊं. How do I make my country more economically powerful? Because economic power होगा तभी तो आप फौज खड़ी करोगे. करेक्ट. हथियार कहाँ से खरीदोगे आप? जैसे आज यूक्रेन में देख रहे हैं, उसके बाद पैसे खत्म हो गए, तो वो पैसे खत्म होते तो यार sue for peace. यार वो पीस, और वो मांग रहा है, सब जगह जा जा के मांग रहा है. at some point, every leader will say, I have to look after my country's economy first. So the war is actually happening between two countries' economies. They are not happening between soldiers. Soldier is a manifestation of that. And in an economy, a stronger economy will always defeat a weaker economy in the long run. सर मेरा एक सवाल है, जब भी हम ये देख रहे हैं, मेरा वही सवाल पे मैं वापस आता हूँ कि जब हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी वजूद जो है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो इंडिया के ऊपर बेस्ड है. अगर ये POK का मैटर सेटल्ड हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ होगा नहीं करने को, क्योंकि बलूचिस्तान और ये सब पे अगर वो अपना पूरा अगर लगा दे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है.
अब इंडिया जब स्ट्रेंथन हो रही है, क्या जैसे अभी चाइना का जो विजन 2049 है कि हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, हमें सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है, हमें यूएस डॉलर को रिप्लेस करके चाइनीज करेंसी को सर्कुलेशन में लाना है, अभी उनके एस्पिरेशंस वहाँ हैं कि हमें ताइवान को लेना है। अब इंडिया जब उस ट्रेजेक्टरी पे है जहाँ पे हम भी आगे बढ़ने की अपने पूरे पॉपुलेशन को एक मिडिल इनकम पे लाने की, ताकि एक डिग्निफाइड जिंदगी हर इंसान जिए, हम उस लेवल पे दें, तो हमें ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ ना देख के हमें अपनी एस्पिरेशन शिफ्ट नहीं करनी चाहिए कि हम चाइना से कैसे, हम पीछे हैं और काफी समय तक पीछे रहेंगे, बट ऑब्जेक्टिव शिफ्ट नहीं होना चाहिए इस तरफ से उस तरफ, ताकि हम इकोनॉमिकली ज्यादा सोचें, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली सोचेंगे पैसे ज्यादा आएंगे, पॉपुलेशन का जो स्टैंडिंग है वो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। करप्शन वरप्शन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर ऑटोमेटिकली जब पैसे बढ़ते हैं, इकोनॉमी बढ़ती है, तो आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। Firstly, bring as many people as possible to a surplus generating level. अगर मैं जो कमा रहा हूँ वही खा रहा हूँ दिन का दिन, तो मेरा 0/0 है। आई एम नॉट अ ड्रेन ऑन द इकोनॉमी, बट आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग ईदर। करेक्ट। मैं 20 साल की डेली वेजेस करता हूँ, डेली मतलब चाहे मैं हथौड़ा मार के कर रहा हूँ या पत्थर तोड़ के कर रहा हूँ या ईंटें उठा के कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, बट इफ आई एम कंज्यूमिंग वट एवर आई एम अर्निंग, देन आई एम जीरो। इट इज ओनली व्हेन आई बिकम सरप्लस, कि मैं कमाता हूँ 1 लाख और मेरा खर्चा है 25-30 हजार का, उसके अलावा जो भी मैं खरीदता हूँ, टीवी खरीदता हूँ, मोटरसाइकिल खरीदता हूँ, ये खरीद, उससे इकोनॉमी चल रही है। तो आपने अगर किसी भी नेशन की इकोनॉमी देखनी है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो बेसिक फंडिंग है, खाने का फंडिंग, रहने का फंडिंग, उसके अलावा मेरे पास कितना सरप्लस है, उस सरप्लस से इकोनॉमी चलती है, उस सरप्लस से नए फैक्ट्री बनते हैं। आपके हिसाब से विकसित भारत का जो सपना है वो क्या है और कैसे पूरा हो सकता है? विकसित भारत मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक सोच है, इट्स अ थिंकिंग। अब विकसित भारत, पहली बात तो पूरा भारत अगर कोई बोले कि हम सब लाइन में खड़े हैं और हम सब 247 में यहां तक पहुंच जाएंगे, तो दैट्स नॉट द वे नेशन ग्रोज। सम सेगमेंट विल ग्रो फास्टर, सम विल रिमेन बिहाइंड, कुछ रीजन आगे निकल जाएंगे, कुछ रीजन पीछे रह जाएंगे। आज जो रीजन, let's take Bihar for example, or say UP to a certain extent, which was considered at one time the richest state. In 1960s, Bihar was considered to be the richest state, and in 30-40 years, it has now come down to what is arguably not the richest state. At the same time, demography-wise, they are the ones who are contributing to Indian demography, because all other states, you take Kerala and all, for example, its birth rate is down. Not down, is beyond point of sustainability. Yeah, it's below replacement. Below replacement. So The average of India is 1.9, which is below 2. We need 2 or 2.1. 2.1 we need. Any society needs 2.1, just maintaining, because that 0.1 is The replacement. because 2, no? 2 parents die, so 2 children will take their position. So that is, and that 0.1 is meant for casualties and sickness, this, that, whatever. So if you look at certain environments, so any government, what is the responsibility of a government? I think they should create an environment जहाँ पे ट्रेड ज़्यादा फ्रीली हो और ज़्यादा वेलोसिटी में। अगर आपका मेन ट्रेड कॉरिडोर, जो हिंदुस्तान का मेन ट्रेड कॉरिडोर इज दिल्ली एंड बॉम्बे, और उसका स्पीड जो है इस हाईवे का, वो स्पीड आज से 10-15 साल पहले 20 किलोमीटर पर आवर था। दैट वाज द स्पीड ऑफ द हेवीएस्ट आर्टरी of industry in our country. 20-30 kilometers, whatever it was. If that is moved to say 60 kilometers per hour, that velocity moves. So automatically the country becomes faster, because money velocity is moving faster. आप 10 रुपए कमा रहे हो, आप उसको खर्च कर रहे हो, तो वो उसका साइकिल स्पीड बढ़ रहा है। If you got digitalization, then a lot of information transfer is happening. The reason why you exist in many ways, you exist in many ways is because of digital platforms that have come up. मैं तो कई बार बोलता हूँ कि जितने Zomato, Swiggy, Unicorn, ये सब जियो के बाद आए हैं। जियो से पहले कुछ नहीं था। So in a way, विकसित भारत is a सोच, it is a thinking. I don't think it's a milestone कि जिस दिन हर भारतीय को 3,000 रुपए पर डे मिलेंगे, उस दिन हम विकसित हो जाएंगे। No, I think it will be in terms of what our overall economy is. What is our distribution of that economy? That's also very important, because विकसित भारत के लिए ये मतलब है कि most of भारत should be विकसित, not a certain percentage is विकसित and the rest of them are becoming more and more unviksit on a literally monthly basis.
So it has to be the distribution also. So we may be the third, fourth largest economy, but how much of it is equally distributed is what will enable. See, at the end of the day, अगर आज के डेट में हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा advantage, which is true also, and that's where we'll beat China hollow, is in demography. Because China is an aging population. China's population is now hugely in a plummeting decline. And also because of their famous one child policy. So अभी उन्होंने ये रिवर्स किया, it's too late. but अभी Now बहुत it's too late. Now it's too late because that point of no return has been crossed a decade ago. okay. A decade ago. Matter of fact, interestingly, in the next, say, 30, 40 years, the Han population, which is the dominant population of China, they will cease to exist because they have become like Japan or like Korea. They can do what they want, but they cannot sustain and bring it back to that level. And the main reason for this is also urbanization. So because when you are in rural areas, खेतों में जब आप हो rural area में, then children are free labor. And the marginal cost is not much. एक बच्चा और पैदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेगा और 6, 7, 8 साल की उम्र तक he'll start contributing. और नहीं भेड़ को चराएगा, पत्ते उत्ते तोड़ के ले आएगा, सब्जी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, whatever, girl will help in cooking. So it's self-sustained. But when you urbanize, every additional child is a huge cost. स्कूल का फी, स्कूल बस का फी, ट्यूशन का फी, ये फी, वो फी, फलाना, तो अनलिमिटेड खर्चे. Unlimited. So you will usually find when people urbanize, they will reduce the size of the family. They'll come down to a one child unit. or maybe no child. So all of this contributes to Viksit Bharat. I don't think the 2047 some UN, the UNO will come or WHO will come and say we have looked at certificate and जैसे वो 7799 वो तो है ही नहीं, वो तो ISO कहीं certification तो आपको हमने certify कर दिया. It is that in the next 20 years, 2 decades, ये 15, 20, 40 projects अगर हम ठीक से कर पाएं, जिसमें education, health care, scientific temperament, innovation, ये सब चीजें अगर civic sense and ये सब अगर साथ चले, I think we have to understand what is the life of that man who doesn't have civic sense in the totality and not think ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है. It has become a norm कि चलता है यार. Lovely conversation, sir. Thank you so much. You're welcome. For coming on Unlock with Kunal Jaisingh. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, and we'll do one more session very soon. True. Sure. Thank you so much. Thank you. Thanks a ton. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले.